सो ये जो पीछे ओके तो ये जो पीछे पानी ट्रैप हो गया है, दिस वाटर दैट हैज बीन ट्रैप्ड बिहाइंड, दैट एंटायर स्ट्रक्चर गेट्स कॉल्ड अ लगून. ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड एज अ लगून और हाफ इन जर्मनी. कहीं तो उसको नेरुंग भी बुलाते हैं, NERUNG, इफ आई एम नॉट वेरी रॉन्ग ना, तो ऐसा भी कुछ बुलाते हैं उसको. ओके, सो दिस इज ये अलग अलग नाम होते हैं लगून्स के. ओके, सो ये जो पीछे बनता है, रादर वो जो स्ट्रक्चर लेक जैसा स्ट्रक्चर बनता है, इट्स कॉल्ड एज अ लगून. लगून की खासियत ये होती है कि इट कंटेन्स ब्रैकिश वाटर. नाउ सी, दिस इज नॉट कांस्टेंट. ये कोई सी वाटर नहीं है जो कॉन्स्टेंटली अंदर बाहर करता है, राइट? देयर इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज ऑफ दिस बार और बैरियर. देयर इज नॉट कांस्टेंट एक्सचेंज ऑफ सी वाटर. ओके, ये प्रॉब्लम होता है, तो उसकी वजह से वहां का जो पानी है वो थोड़ा सा ज्यादा स्टैग्नेंट है. ओके, सो लगून्स आर कंसिडर्ड, they are shallow water bodies, but they are clearly more brackish, ज्यादा brackish water contain करते हैं वो. ओके, एंड एक और चीज, लगून्स जो होते हैं ना, तो उधर अगर आप लाइक लगून्स में आप पोर्ट्स वगैरह नहीं ये करते हो, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस बार और बैरियर, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर शिप्स और अदर boats to go in and go out and come in and go out and all. Okay, so lagoons present a hindrance to navigation and traffic and everything, or shipping. ठीक है, चलेगा, समझा? गुड, ओके, ठीक है. Now we move on to coral reefs and atolls. Okay, हम coral reefs and atolls करते हैं. कोरल रीफ्स एंड अटोल्स का कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा. कोरल रीफ्स का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, देन उसके बाद अटोल्स करते हैं. ओके, कोरल रीफ्स क्या होते हैं ना, दे आर सिंपली फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ स्केलेटन्स. ओके, किसके स्केलेटन्स का डिपोजिशन होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वो स्केलेटन्स किस मटेरियल के बनते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के. ओके, तो एंड कौन से एनिमल्स होते हैं? कोरल एनिमल्स होते हैं. ओके, मरीन एनिमल्स होते हैं जो विच लिव बिलो द सी, सब सरफेस लेवल पे रहते हैं, सब मतलब समुंदर के नीचे रहते हैं. नाउ ये जो एनिमल्स होते हैं उनके मल्टीपल ऐसे दे लिव इन कॉलोनीज. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज दीस पर्टिकुलर एनिमल्स go ahead and they secrete calcium carbonate, okay, within their tissues. Now when they like they get attached as colonies together, and when they die, ये simply harden हो जाता है. ये जो limestone जैसा structure होता है ना, ये polyps जो होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो उनका structure skeleton जो होता है, that simply rather उनका वो जो dead skeletons होते हैं, वो simply get hardened or crystallized into coralline limestone. They get cemented into coralline limestone. Okay, and that is where you get the whole this of a coral reef. मतलब the idea of a coral reef. Okay, so, to begin with, आपको polyps चाहिए. Okay, जो coral reefs बनाते हैं, ऐसे organisms जो होते हैं, most abundant of these coral animals जो होते हैं ना, उनको polyps कहते हैं. Okay, so consider that one species of animals. पॉलिप्स जो है वो चाहिए. ओके, वंस अगेन, पॉलिप्स की खासियत क्या है कि दे एक्सक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट विद इन द टिश्यूज. ओके, पॉलिप्स की एक और खासियत होती है कि ये ना मल्टीपल ये कोरल्स जो होते हैं, ये मल्टीपल कलर्स में एग्जिस्ट करते हैं. ओके, द रीजन बीइंग कि दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एन एल्गी. ओके, वो एल्गी का नाम होता है ज़ूज़ैंथल. अब ये ज़ूज़ैंथल जो होता है उसकी खासियत होती है कि वो ना इट इज मल्टी कलर्ड. ये जो एल्गी होता है ना, ये मल्टी कलर्ड होता है. तो ये एल्गी क्या करता है? इट सीक्स प्रोटेक्शन एंड इट गिव्स द ब्यूटीफुल कलर टू द पॉलिप्स. लेकिन उसके बदले में इट विल गिव यू दैट ब्यूटीफुल कलर एंड एवरीथिंग. ओके, सो दैट्स द थिंग. उसको सिर्फ प्रोटेक्शन चाहिए उस एल्गी को, सो इट लिव्स विद इन द पॉलिप्स. ओके, वो पॉलिप्स के अंदर रहता है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इफ द सिचुएशन अराउंड द सी चेंजेस, तो द कोरल, वो जो पॉलिप्स होते हैं, वो इतना इरिटेट हो जाते हैं कि वो उस एल्गी को दे कैन थ्रो आउट द एल्गी. सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. तो वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन फिर खत्म हो जाता है. ओके, नाउ वंस अगेन, पॉलिप्स जो रहते हैं, polyps जो होते हैं, that is the most abundant of the coral animals. Okay, now these are going to secrete calcium carbonate and that is where the whole hardness of the structure comes from. Okay, उनके जो dead skeletons होते हैं, तो उससे वो that gets cemented into coralline limestone and that's where the whole coral thing comes from. Okay, now इनका ये coral reefs जो होते हैं,
इनके साथ ना एक और like there are multiple conditions attached to here and how coral reefs can survive the best and everything, so we'll check those out. But before that, ये 3-4 points समझ लीजिएगा कि colors जो होते हैं they come from that algae zooxanthil, and ये like when those polyps die, then the skeletons become that coralline limestone. Okay, now where are these found? Where do you find coral reefs? They are usually found in tropical and subtropical zones. Okay, ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलते हैं. गर्मी जहाँ पे होगी ना, थोड़ी सी गर्मी, ये बहुत कोल्ड रीजन्स में सर्वाइव नहीं कर पाते. ओके, तो जहाँ पर थोड़ी सी गर्मी होगी उस रीजन में मिलते हैं. एंड यूजुअली दे अकर इन शैलो सीज, बट इन वेरी रेयर केसेस आपको डीप सी कोरल रीफ्स भी मिल जाते हैं. ओके, काफी नीचे के डिस्टेंस तक. मोर ऑफन देन नॉट दे आर शैलो, बट शैलो सीज का ये है. ओके, स्ट्रक्चर है. चलो, ये जो particular page है, that is the most important page when it comes to coral reefs. Okay, conditions for formation of coral reefs. This honestly is the most important page. Okay, I'm not kidding about that. So let's see what that is. टेम्परेचर क्या चाहिए उनको. ओके, कितना टेम्परेचर चाहिए होता है कोरल रीफ्स के बनने के लिए? एनीवेयर बिटवीन 20 to 32 डिग्री सेल्सियस. ओके, एनीवेयर बिटवीन 20 to 32 डिग्री सेल्सियस, एनीवेयर where you will get this suitable temperature, and you have the rest of the conditions also, actual polyps है and presence of other conditions, you will get this particular coral reefs. Okay, लेकिन that is the temperature condition, strictly adhere करना पड़ता है to this temperature condition. Okay, इसीलिए tropical या subtropical zones में मिलते हैं between 30 degrees north to 30 degrees south. Okay, if this is your earth, ये earth है, बीच में equator है, this is the equator, and this is 30 degrees north and this is 30 degrees south, है ना, 30 degrees north and 30 degrees south. Okay, तो इसके बीच, ये जो बीच वाला एरिया है, यहाँ पर आपको कोरल्स मिलते हैं. ओके, फाइन. वार्म करंट्स जो होते हैं, they help the corals thrive. वार्म करंट्स कोरल्स अच्छा खासा थ्राइव कर जाते हैं. कोल्ड करंट्स डू नॉट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ कोरल्स. तो अगर कोई कोल्ड करंट पास कर रहा होगा तो it will kill off the coral reefs. वो मतलब कोरल सर्वाइव ही नहीं करेंगे वहां पे. they won't even think of surviving in such a region or growing in such a region. Okay, तो कोल्ड करंट्स जिस तरफ होते हैं वहां पे कोरल रीफ्स नहीं मिलते. so you will see that they are not mostly found on the western coast of continents. Okay, वहां पे नहीं मिलेंगे आपको कोरल रीफ्स. फाइन. Okay, now let's move on to the next section. Depth, कहाँ तक मिलते हैं समुंदर में? अगर नीचे, कितना डीप तक मिल जाएंगे आपको? Okay, what is the depth up to which the coral reefs can be found? Now they usually shallow waters का किस्सा है. I told you this is usually found in shallow waters at the depth of 100 feet. Okay, 100 feet is considered ideal. All right, it is rarely found below 300 feet. 100 to 0 to 300, 100 feet ideal होता है. यहाँ तक 100 feet का depth ideal है उसका. लेकिन कभी-कभी almost 300 feet तक भी मिल जाता है. Okay, that is also possible. Now depth is dependent upon the reach of sunlight. Why are corals found in shallow water? is because वो ना sunlight पे depend करते हैं. Coral reefs जो होते हैं वो अपनी life के लिए algae, वो जो algae है ना, जो वो coral reefs के अंदर रहता है, that poor thing depends on the sunlight. Okay, so that is why वो जो कोरल रीफ्स होते हैं वो थोड़े से राजा कोरल्स जो होते हैं वो क्लियरली थोड़ा सा फोटिक जोन को सीक करते हैं. लाइक जहां तक सनलाइट पेनिट्रेट कर पाता है पानी के अंदर, दैट इज द डेप्थ. ओके, दैट विल बी द डेप्थ अप टू व्हिच विल फाइंड द कोरल रीफ्स. ओके, सनलाइट दोनों के लिए जरूरी है, बोथ फॉर द पॉलिप एज वेल एज द एल्गी. ओके, इट्स नेसेसरी, लाइक दैट्स द कंडीशन. ऑलराइट, मोर इम्पोर्टेंटली फॉर द एल्गी, बिकॉज देयर आर पॉलिप्स जो नीचे भी रहते हैं जहां पर सनलाइट नहीं पहुंच पाती, डीप वाटर में. ओके, नाउ यू कम टू द क्वालिटी ऑफ वाटर. क्वालिटी ऑफ वाटर, सेलाइन वाटर. ओके, ये जो पानी है सेलाइन, इतने पानी में ये सिर्फ ये हो सकता है, ये फ्रेश वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनको सॉल्टी पानी चाहिए, सेलाइन पानी चाहिए. ओके, लेकिन वो जो पानी है दैट शुड बी क्लियर, ऑक्सीजनेटेड एंड फ्री ऑफ सेडिमेंट. ओके, सो इफ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ मडी वाटर और समथिंग, तो वो मड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जाके उन कोरल्स को इरिटेट करते हैं, एंड दैट algae is thrown out, and then that's not a very nice thing for the corals. Okay, that's not how the corals survive. So clearly आपको saline water चाहिए, लेकिन that water needs to be clear, oxygenated, free of sediment. इसीलिए they do not survive near mouths of rivers, because at the mouth of the river is going to get in a lot of supply of sediment, right? तो वहां पे coral reefs कभी survive नहीं कर पाएंगे. Okay, and coral reefs will always tend to grow seawards rather than landwards, because they will get more and more saline water, fresher saline water, okay, towards the sea rather than towards the land. So corals will always tend to grow seawards. वो landwards नहीं grow करते, seawards grow करते हैं.
समझा ये कॉन्सेप्ट? तीन ये जितने भी कंडीशंस यहाँ पर लिखे हुए हैं और जितने भी एक्सप्लेनेशंस इन अ पीपल, कॉन्स्टेंटली इसके क्वेश्चंस बनते हैं. सो प्लीज पे अटेंशन. ओके, प्लीज पे गुड अटेंशन टू दिस. I'm repeating once again, this page is extremely important. All the conditions for the formation of coral reefs. Okay, fine. The last, how do you say, topic that we come to is, no, apart from atolls, इसके बाद atolls करेंगे. एक types of coral reefs, कितने types के coral reefs होते हैं. So we'll come to those. Okay. So you will either have a fringing reef or a barrier reef, और then एक atoll बनता है. Okay. Fringing reef का मतलब क्या होता है कि it is attached to the corals. ये जो island है, suppose this is the island. Okay, ये वो island है, and यहाँ पर तो वो फ्रिंज जो होता है, फ्रिंज समझता है आपको? फ्रिंज माने बॉर्डर. ओके, फ्रिंज का मतलब होता है बॉर्डर. तो इट इज क्लोज टू द शोर. ये जो तो कोरल रीफ जो होगा ना, वो ऐसे यहाँ पे अटैच हो जाएगा, इसके बॉर्डर को अटैच होगा. ओके, एंड यहाँ पर कोरल रीफ बनता है. कैन यू मेक आउट दिस ओवर हियर? दिस इज द लैंड. ग्रीन कलर का जो पूरा वेजिटेशन आपको नजर आ रहा है, दैट्स द लैंड पार्ट ऑफ इट. ओके, एंड कैन यू सी दिस इज द कोरल, दिस इज द कोरल दैट इज अटैच्ड टू इट. तो ये जो कोरल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रिंजिंग रीफ. ओके, दैट विल बी टर्म्ड एज अ फ्रिंजिंग रीफ. तो ये जो फ्रिंजिंग रीफ होती है ना, दैट इज क्लोजर टू द शोर एंड इट इज वाइडेस्ट. जहां पर आपको एक एक प्रोट्रूडिंग हेडलैंड मिल जाता है ना, तो वहां पे वाइडेस्ट होता है. वंस अगेन, द मोर द रीफ, द मोर द डेवलपमेंट टुवर्ड्स द सी, द ग्रेटर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रीफ टू बी एक्सटेंडेड दैट वे. ओके, तो रीफ्स विल बिकम वाइडर जहां पर द हेडलैंड गोज टुवर्ड्स द सी. सी के जितना अंदर वो हेडलैंड जाएगा, उतना वो रीफ वहां पे वाइडर होगा. ओके, बिकॉज वंस अगेन आई रिपीट माई सेल्फ कि रीफ्स जो होते हैं, कोरल रीफ्स जो होते हैं, उनको सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए अच्छा वाला समुंदर का पानी चाहिए. सो द डीपर यू गो इनटू द सी, द बेटर द क्वालिटी ऑफ द कोरल्स. ओके, sometimes they are separated from the shore by a narrow lagoon. बहुत पतला सा lagoon होता है, and वो भी narrow, very narrow lagoon. Okay, so sometimes that is also a possibility. Alright, ठीक है. Next you come to barrier reefs. Barrier reefs भी वैसे ही होते हैं. Barrier reef भी barrier reef का scheme क्या होता है ना, कि barrier reefs are separated from the shore. अभी ये कैसे प्रॉपर शोर को अटैच थे, राइट? दिस वाज प्रॉपर्ली अटैच्ड टू द शोर. तो बैरियर रीफ्स जो होते हैं, उसके बीच में आपको ये चैनल मिल जाता है. दिख रहा है आपको ये चैनल? ये पूरा ऐसे बीच वाला चैनल मिल गया है आपको, जिसके अंदर समुंदर, आई मीन देयर इज बोट्स एंड एवरीथिंग. तो ऐसा वाला एक चैनल मिल जाता है. ओके, सो आपको आपका लैंड एक तरफ एंड कोरल एक तरफ, दिस इज द, एंड इट इज सेपरेटेड बाय अ वाइड चैनल और अ लगून. ओके, अब ये रीफ्स जो होते हैं, दे आर यूजुअली पार्शियली सबमर्ज्ड होते हैं. कभी कभी उन रीफ्स के बीच में थोड़े से गैप्स हो जाते हैं. यू कैन सी गैप्स इन बिटवीन दोज रीफ्स, एंड देन वो गैप्स कैन बी यूजफुल फॉर शिपिंग. ओके, तो वो शिपिंग के लिए अच्छे यूज हो जाते हैं. फेमसली यू हैव द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, है ना? प्लीज रिमेंबर वो ऑस्ट्रेलिया के किस तरफ है, कौन से साइड में लाई करता है, सो ऑन सो फोर्थ. ओके, नेक्स्ट यू कम टू अटोल्स. लास्ट जो टॉपिक है, दैट इज अटोल्स. ओके, अटोल्स जो होते हैं, दे आर सर्कुलर इन शेप. ये उसकी खासियत है कि ये जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, वैसा ही स्ट्रक्चर है कि इट्स जस्ट सर्कुलर, दे आर जस्ट सर्कुलर इन शेप. बीच में कोई लैंड नहीं है. कैन यू सी एनी लैंड ओवर हियर? यहाँ पर अंदर बीच में कोई लैंड नहीं है. आपको बस एक सर्कुलर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मिल जाता है. ओके, समटाइम्स इट इज कंप्लीटली अटैच, समटाइम्स उसमें थोड़े थोड़े से गैप्स रह जाते हैं, बट क्लियरली दैट्स द केस. ओके, एंड ये जो जहाँ पे मैंने क्रॉस मार्क किया है ना, उस पोजीशन में यूजुअली एक शैलो लगून होता है. ओके, देयर इज अ प्रॉपर शैलो लगून ओवर हियर. तो ये वो लगून जैसा स्ट्रक्चर है यहाँ पे. ओके, मतलब ऐसा वेरी शैलो लेक जैसा स्ट्रक्चर बन गया है. ओके, एंड ये सर्कुलर रिंग कभी कभी टूटी रहती है टू अलाउ द फ्री फ्लो ऑफ वाटर. समटाइम्स इट इज ऑल जॉइंड टुगेदर, समटाइम्स इट इज ब्रोकन. ओके, सो दैट इज व्हाट एन अटोल इज. ऑलराइट, स्पेशल टाइप का कोरल रीफ्स का स्ट्रक्चर होता है. ओके, now let's understand the theories for formation of atolls. आपको ना ये जो दोनों theories है for the formation of atolls, इसके लिए आपको usually ये नहीं मिलता है. What do you say? You don't, आपको पूछा नहीं जाता है कि कौन सा theory कैसे काम करता है. Okay, बट यू नीड टू नो कि किसने कौन सा थ्योरी प्रपोज किया था. कि डार्विन ने सब्सिडेंस वाला थ्योरी प्रपोज किया था, एंड डैली ने ग्लेशियल कंट्रोल वाला थ्योरी प्रपोज किया था. ओके, सो यू गाइज नीड टू नो कि किसका कौन सा थ्योरी है. यू माइट नॉट बी आस्क्ड कि
किसकी थ्योरी के हिसाब से क्या चल रहा है, बिकॉज दैट इज टू टफ अ क्वेश्चन एट योर लेवल. ओके, आपको वैसा वाला क्वेश्चंस नहीं पूछते यूजुअली. फिजिकल ज्योग्राफी में तो नहीं पूछते, इंडियन ज्योग्राफी में पूछ सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक फिजिकल में पूछते आपको. सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ना, this can be posed in only this manner कि किसकी कौन सी थ्योरी थी about the formation of an atoll. And I recently saw that question somewhere in the paper. Okay, so here you go. Darwin's की subsidence theory, and then there is Daly's glacial control theory. Okay, दोनों theories आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अटोल्स कैसे बनते हैं. Okay, आपको पता है कि कोई भी कोरल रीफ बनने के लिए it has to be attached to the land, है ना. कुछ तो land से connection चाहिए. It can't simply, it has to begin as a fringing reef, then it can, then it can progress to being a barrier reef and then go on forward. Okay, मतलब अटोल वटोल बन सकता है. Now clearly यहाँ पर आपको जैसे नजर आता है, तो यहाँ पर fringing reef बनने के लिए, like that is where the original, that is what the first step is, right, in the formation of a coral reef. तो fringing reef बनने के लिए भी उसको basically there needs to be land, right, it has to be attached to a land. तो atolls में आपको वो land नहीं नजर आता है. Okay, so जो पूरा theory है, डार्विन का subsidence theory और Daly's glacial control theory, both these theories are trying to present a proper a proper story कि कैसे बने होंगे ये atolls. Okay, so let's look at Darwin. Darwin goes ahead and says कि how these atolls are formed. Okay, so Darwin goes ahead and ये नजर आ रहा है आपको, बड़ा कर. Okay, so that you can, after Darwin वाला figure देखा है. Okay, ये वाला you can make out the left hand side वाला figure, right? You can make out this one. We are going to check this one out. Okay, हमको ये check करना है. So here we go. So Darwin ने क्या propose किया कि basically coral reefs जो है ना, they all began as fringing reefs to islands. Okay, so you need the presence of an island. कोई तो island होना चाहिए वहाँ पे. Okay, so basically somewhere in the sea there existed an island. Okay, and then there was the development of this fringing reef next to that island. So this is your island. First step में ये आपका active volcano है, that's an island. And you see there is a fringing reef next to it. Okay, so second step में एक fringing, उसके आजू बाजू एक fringing reef बन जाता है. फिर उसके बाद क्या हो जाता है, that the island subsides. Okay, due to tectonic issues or some other reason the island subsides माने क्या, island नीचे चला जाता है. Okay, पानी के नीचे चला जाता है. लेकिन reef का ये क्या होता है, what is the tendency of the reef to extend towards the sea. If the island is going subsiding, if the island is going below the water, the reefs will tend to grow upwards. Why? Because they need to be closer to the sun, closer to the sea, है ना. So that's why the reef grew upwards, and जो बनता है वो barrier reef होता है. Okay, so obviously a barrier reef is formed because now you also get a channel, है ना, lagoon जैसा channel मिलता है. Then island पूरी तरह से subside कर जाता है. Island यहाँ पे है नीचे. Okay, this is where the island is, and पीछे जो रह जाता है वो ऐसे barrier reef के form में ये atoll है. That is what the atoll is. Okay, ठीक है. So these now you have to basically begin with an island. Okay, क्योंकि बिना उस island को attach किए हुए there cannot be a fringing reef. Okay, reef basically नहीं बन सकता है जब तक there is not, you don't have the presence of land. किसी तरह से land चाहिए आपको. Okay, so both Darwin as well as Daly are going to give you those theories. Okay, so Darwin का theory था कि एक island है, उससे पहले एक fringing reef attach हो गया, then island subside हो गया, but reef का tendency है कि वो upwards grow करे. Okay, so reef went and grew upwards towards the sea. Okay, so and closer to the sun obviously, so that is why it grew upwards. Okay, and then when this island completely subsided, पीछे जो रह गया, that is called as an atoll. Okay, simple enough. Now let's consider what okay, now let's consider what Daly had to say. Okay, ये Daly का theory है. हाँ, okay, सबको नजर आ रहा है Daly's glacial control theory. Okay, now Daly ने क्या बोला कि glacial control, so now obviously you have to talk of ice age and everything. Okay, so glacial control theory says कि first of all na, water was locked in ice ages. Okay, when there was an ice age, everything turned into ice, so all that water became locked in ice sheets and stuff like that. Okay, and then islands were eroded. Okay, इस चक्कर में islands erode हो गए. Okay, then उसके बाद
रीफ्स जो थे, सो यू हैड दिस आइलैंड, ये एक आइलैंड है एंड उसके ऊपर ये एक रीफ बना है, ओके उसके ऊपर रीफ्स बनते थे. सो रीफ्स ग्रू अपवर्ड्स ऑन दीज इरोडेड टेरेसेस ऑफ आइलैंड्स. ओके, तो रीफ्स जो थे ऑब्वियसली बिकॉज विल ग्रो टुवर्ड्स द सी एंड टुवर्ड्स द सन. सो रीफ्स का टेंडेंसी होता है कि अपवर्ड्स ग्रो करे इफ द आइलैंड इज एनीवेयर क्लोज बाय. तो उसके बाद द रीफ का टेंडेंसी विल बी टू ग्रो अपवर्ड्स एंड टुवर्ड्स द सन, सीवर्ड्स एंड टुवर्ड्स द सन. ओके, सो ये इरोडेड आइलैंड्स के ऊपर दिख रहा है अभी, ये कैसे इरोडेड आइलैंड्स के ऊपर द रीफ बनना शुरू हो गया. ओके, फिर उसके बाद क्या हो गया, आइस एज के बाद एज वापस चेंज हो जाता है. सो ओके, लेट मी टेल यू, इफ यू आर नॉट अवेयर, यूजुअली ना अपनी जो थ्रू आउट द जियोलॉजिकल टाइम देयर हैव बीन एक्सट्रीमली कोल्ड एंड देन cold and hot ऐसे periods रहे हैं. Okay, so there is this period during which everything starts to become colder and colder and colder. The temperature starts to drop, everything starts to become colder and colder and colder, and we are approaching the ice age. Okay, humanity, rather the world is the planet is approaching the ice age, and then उस चक्कर में आइस एज जैसे कंडीशंस आ जाते हैं, सारा पानी लॉक हो जाता है आइस के अंदर एंड एवरीथिंग. We've all seen ice age ना, the movies. They're a fantastic watch anyways, but you know how that process works. And then after the ice age is over, after the ice age is done, then what happens is that the temperature starts to rise. Okay, temperatures rise होना शुरू हो जाते हैं, global temperatures rise होना शुरू हो जाते हैं, and ice starts to melt. तो डैली का कहना था कि जो फर्स्ट आइस एज वाला पीरियड था ना, तो उसमें ये आइलैंड्स ने अपने अपने कोरल रीफ्स बना लिए. ओके, अच्छा खासा कोरल रीफ बना लिया. फिर उसके बाद वाटर लेवल स्टार्टेड राइजिंग. ओके, वाटर लेवल्स राइज होने लगे, ग्लोबल टेम्परेचर्स इंक्रीज होने लगे बिकॉज दैट आइस स्टार्टेड मेल्टिंग. सो जैसे जैसे वो आइस स्टार्टेड मेल्टिंग ना, तो पानी का लेवल राइज होने लगा, द वाटर लेवल ऑल्सो स्टार्टेड राइजिंग. ओके, ना उस वाटर लेवल के राइज के साथ टू कीप अप विद दैट ये जो रीफ्स है ना वो भी राइज करने लगे. Now here the island cannot rise, right? The island can only go deeper and deeper into the sea because the sea level is rising. Okay, but reefs can keep up. Reefs are actual live creatures, right? So they can keep up. So they started building upwards to the surface of the sea, and finally at some point of time this island was completely submerged below the water level, below the sea level, whereas ये जो रीफ्स थे, है ना, ये रीफ्स जो थे वो ऊपर की तरफ पीक पर गए, अबव द वाटर. ओके, एंड यूजुअली वो नीचे अगर वो रीफ्स के नीचे अगर आइलैंड मिला ना आपको, ये आइलैंड्स वगैरह मिले आपको, तो देन दैट आल्सो सपोर्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ द लगून, है ना, वो भी इस लगून के फॉर्मेशन को सपोर्ट करते हैं. सो ये दोनों थ्योरीज अच्छे माने जाते हैं. डाली का ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है, इफ आई एम नॉट वेरी रॉन्ग, बट बोथ थ्योरीज आर कंसिडर्ड प्रीटी नॉर्मल. ओके, and that finishes coastal landforms for us. Was this tough enough? Weird information मिली आपको आज के दिन, but कोई बात नहीं, this should still be okay. All right, I have already posted all these notes on your group. I think I posted them day before yesterday. I posted them day before yesterday in the evening. So please check out your groups and download those notes. Okay, I keep reminding everyone that I've posted the notes, so I don't have to send it to you personally because I can't do that. I can only post them on the notes. ठीक है? All right. अभी शिफ्ट कर जाए, पॉलिटी कर लेते हैं. No? ठीक है. This is the polity section. Okay, what we began with yesterday is the union executive part. Okay, first we'll cover the executive part, then the legislature part, and then so on and so forth. Okay, abhi dekh lete hain. Union executive में we discussed the positions of the president and the prime minister. It wasn't an actual comparative study, but I told you very clearly कि president जो होते हैं वो nominal head है, and ये जो होते हैं prime minister जो होते हैं he or she is the real head of the government. Okay, now the first person, like obviously because being the head of the state and everything, the first officer that we will consider is the president. Okay, and it's a vast topic. President is a vast topic. Okay. Sorry. So we've already covered how the election of the president goes. Qualifications क्या होंगे, conditions क्या है, term of the president कितने दिनों तक होती है, impeachment का procedure explain किया हमने कल,
and we checked out what are the conditions of the president's office. Okay, now let's see what happens if there is a vacancy in the office of the president. मैंने आपको पहले ही बोला था, this is the most important office in the polity of India. पूरे कंट्री की पॉलिटी में ये सबसे important office है. Okay, the most important office by default. So there cannot be a vacancy in the office of the president. We can't say we don't know how things are going to go because there is no president in the office. Okay, ऐसा नहीं हो सकता है. So there needs to be somebody who is the president of India or acting as the president of India. Okay, somebody who takes upon the acting part of it. Acting part of it as in the acting president of India. So ye either of these conditions should be satisfied. Okay, now how this works is कि vacancy of the अभी vacancy क्यों होगी president के office में? इसका मतलब क्या होता है ना people कि if there is a condition which exists जहाँ पर there is a like you know there is a possibility that the office might fall vacant, so it needs to be immediately you know supplied with another person कि चलो ये person को वहाँ पे replace कर देना चाहिए. Okay? So that is how it works. तो vacancy कैसे कौन सी cases में हो सकती है? On the expiry of his term, 5 साल खत्म हो गए president के, या फिर you know by death है अगर unfortunately he dies in the office, and this has happened I think. By his resignation, resignation दे दिया उन्होंने vice president को, so that could be thing. Impeach हो गए president. Or then setting aside of his election as president. This is interesting. If there was an election petition lodged in Supreme Court and the Supreme Court decides that this election of the president is unlawful or you know unconstitutional in any way, then his election is set aside, and then you have to conduct the process all over again and have the new election. Okay, and have a new president. ठीक है, that's how it works. Good enough people? अभी किस केस में क्या करना चाहिए? Let's say उनका term expire हो गया. Okay, his term has expired, so there should be an election to fill the vacancy before the expiration of the current term. अगर आपको पता है कि उनका term आज expire होता है 3 मार्च को president का, एंड आपको पता है कि इलेक्शंस के लिए प्रोसेस कितना लगता है, यू नो कि यार मैक्सिमम 2 months का वगैरह प्रोसेस लगेगा, लाइक इट विल टेक, जब से अनाउंस किया है तब से ये करने में, लाइक यू नो फाइनली इलेक्शंस कंडक्ट करने में इट विल टेक 2 months. तो वो ऑलरेडी यू शुड प्लान अहेड, द पीपल, द यू नो इलेक्शन कमीशन शुड प्लान अहेड एंड कंडक्ट दोज इलेक्शंस. ओके, दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट कि beforehand, before his term expires, there should be a new president ready. Okay, meanwhile the president will continue to hold office until his successor enters upon his office. Okay, so the old president continues to hold the office until the successor comes in as the new president, he enters upon his office. Okay, other cases में क्या कर सकते हैं? वेकेशन, अगर वेकेंसी हो गया है तो फिर उसको इमीडिएटली एक इलेक्शन, लाइक यू नो इफ ही डाइज और इफ ही रिजाइंस, तो उस केस में भी you have to immediately conduct an election, and within 6 months an election has to be conducted, and that person will that new president will be you know installed as the president of India. Okay, meanwhile while the current president has resigned or unfortunately died or passed away and the election is going to be conducted, उस period में vice president shall act as the president. Okay, so vice president acting president बन जाते हैं. Okay, so ये वो केस होता है. So you do once again हमने उस ऑफिस को vacant नहीं रखा है. Okay, अगर president is unable to discharge his functions due to illness or absence from India, तभी भी vice president उनके functions discharge करते हैं. Okay, उनके नाम पे vice president सारी signatures करते हैं. ठीक है, and if the vice president and president are both not available, अगर president भी available नहीं है, vice president भी available नहीं है, तो chief justice of India acts as the president. Okay, and this has happened once. हमारे एक chief justice थे M. Hidayatullah, so he had once acted as the president of India because हमारे जो current तब के president थे, he passed away, vice president ने resign कर दिया. So following all that process, Chief Justice of India, he was the Chief Justice of India, no? M. Hidayatullah. So he acted as the President of India. Okay. Okay. Next, you come to what sort of what sort of emoluments or allowances the president gets. So please remember the basic condition कि during his term of office they cannot be diminished. Okay, वो कम नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है कि उनको 1-1.5 लाख का कोई allowance मिलता है किसी तरह का, and वो while during his term is going on 2-3 साल बाद उनको बोला कि नहीं अब वो 1.5 लाख का नहीं मिलेगा, वो सिर्फ 50,000 का मिलेगा, तो ऐसा चीज नहीं कर सकते. Okay, you can't
उनके ऑफिस के एमोल्यूमेंट्स या अलाउंसेस को आप ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस कम नहीं कर सकते. ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गेट्स अ मंथली सैलरी ऑफ अबाउट 5 lakhs per month एंड उनको एक ऑफिशियल रेजिडेंस होता है राष्ट्रपति भवन दैट ही यूजेस. ही इज आल्सो एंटाइटल्ड टू एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, जैसे भी पार्लियामेंट में लेजिस्लेशंस बनते रहते हैं. ओके, एंड आफ्टर रिटायरमेंट उनका पेंशन जो होता है दैट इज 50% ऑफ हिज सैलरी. ओके, जितना भी उनका सैलरी होता है उसका 50% उनका पेंशन होता है. ओके, दैट इज हिज अलाउंसेस और दिस. इम्यूनिटीज क्या होती है? दिस इज इंपॉर्टेंट पीपल, because he is entitled to quite a great number of immunities. He both the president and the governor. I mean, the governor is an analogous position in the state. जैसे president union में होते हैं वैसे governor analogous position is an analogous position in the state. Okay, state polity में. तो ये जो दोनों पोजीशंस है ना, यहाँ पर आपको बड़े सारे इम्यूनिटीज मिलते हैं. पर्सनल इम्यूनिटीज मिलती है फ्रॉम, एक ऑफिशियल एक्ट के लिए पर्सनल इम्यूनिटी मिलता है. ओके, मतलब उन्होंने जिस बिल पे साइन किया या उन्होंने जो डिसीजन लिया इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, इन हिज और हर ऑफिशियल कैपेसिटी एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही कैन नॉट बी हेल्ड लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ओके, सो उसके लिए उनके ऊपर कोर्ट में केस नहीं कर सकते. प्लीज रिमेंबर, लीगल लाइबिलिटी नहीं है फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट्स. ओके, उसके बाद उनके ऊपर during the term of his office, okay, while he is within the office, he is immune from any criminal proceedings even in respect of his personal acts. Okay, he cannot, while the term of his office is going on, like while he is, उनको किसी भी criminal proceedings के लिए like उन पे allegations या उनके allegations या accusations लग सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई criminal proceedings initiate नहीं कर सकते. Okay, उनके personal acts मतलब जो वो आउटसाइड ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज जो भी चीजें करते हैं उसके लिए भी उनको फॉर एग्जांपल अभी कौन से पर्सनल एक्ट के लिए क्रिमिनल एक्टिविटी, लेट्स से कुछ जगहों पे लिटरिंग इज नॉट अलाउड, राइट? कचरा वचरा डालना यहाँ वहां पे है ना, वो दैट बिकम्स अ क्रिमिनल एक्टिविटी. मॉन्यूमेंट्स को जाके खराब करना वगैरह, दैट बिकम्स अ क्रिमिनल एक्टिविटी. तो अगर ये, if the president, I'm just taking a very simple example of what a criminal activity might be. So this could be considered a criminal activity, right? So unfortunately, if गलती से vice president के हाथ से ऐसा कुछ हो भी गया, if he or she litters a place, a place that he shouldn't be littering at, or goes ahead and ruins a bit of a monument or something like that, that will be a personal act, right? That is not an official act. He's not acting as the president of India. He's just being a normal person. So even for those personal acts, he cannot be held responsible. Okay, unke khilaf koi, he can be held responsible, but while in office, any criminal proceedings cannot be initiated against him. Just understand this, okay? He cannot be arrested or imprisoned. He is the president of India, the most important officer in our polity, in our constitution. इस बंदे को या बंदी को आप हाथ नहीं लगा सकते, cannot be arrested or imprisoned. Okay, and civil proceedings can only be instituted. Civil proceedings institute कर सकते हैं. उनका जो गांव वाला घर है प्रेसिडेंट का, उसके साथ आप प्रॉपर्टी शेयर करते हैं. ओके, उनके बाजू में आपकी प्रॉपर्टी है एंड आपके लैंड को लेकर झगड़े चल रहे हैं उनके साथ. ओके, तो वो प्रेसिडेंट बन गए तो आप क्या वो झगड़ा डिसाइड नहीं करेंगे? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अभी भी डिसाइड कर सकते हैं. यू नीड इज अ 2 month नोटिस. आपको एक 2 months का नोटिस देना पड़ता है उनको कि वी आर गोइंग टू बिगिन दिस सिविल प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू, एंड देन उसके बाद सिविल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं. ओके, समझा? इज दिस अंडरस्टूड? Okay. Does this mean that once a person becomes the president of India, he or she can perform any sort of criminal activities with impunity? कि उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा? ऐसा नहीं होता है. Usually, unfortunately, if अभी आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, but the provision clearly states कि while that person is in office, he or she cannot enjoy, like he or she cannot be arrested. He or she will enjoy this immunity. Okay, मतलब उनको अरेस्ट नहीं कर सकते या उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं इनिशिएट कर सकते, इम्प्रिजन नहीं कर सकते. ओनली व्हाइल ही और शी इज इन ऑफिस. आपके पास एक डिवाइस है ना, अगर आपको इतना यकीन है कि दैट प्रेसिडेंट इज completely unsuitable for that position, you have a proper way to remove that person from the office, right? Impeachment ka process initiate karo. It will take a few days and then like less than 3 to 4 weeks, and then once that is done, it won't take less than 3 to 4 weeks. Usually zyada time lagta hai, lekin
then that person can be removed from office, and then उसके बाद उनके खिलाफ जितने भी criminal proceedings, civil proceedings initiate करने वो बिंदास करो. Okay, समझा? Did you get this? So it does not mean कि that person is free to do anything and everything he or she wants. Okay, the president. It simply means कि you have to respect the dignity of the office. Once that person is the president of India, you cannot simply go around, arresting or imprisoning that person for his or her personal acts. ऐसा नहीं कर सकते. Okay, that's what it says. चलो next चीज जो है, that is, let's consider the powers and duties of the president. Okay, now this is very important. Powers and duties of the president में अब मैंने आपको कल बताया था, right? There are multiple powers and duties. उनके administrative, military, diplomatic, legislative, judicial powers, सारे के सारे powers consider करते होंगे. Okay, अभी he is the head of the executive power. Okay, तो इनके, आई टोल्ड यू, इनके नाम पे सारा बिजनेस, अपने इंडिया का जो भी बिजनेस चलता है वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे चलता है. इट इज ऑल डन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. ओके, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक जो भी सिग्नेचर्स होते हैं वो उनके होते हैं, जो उनके बिहाफ पे, लाइक पीपल ट्रीटीज भी साइन करते हैं तो उनके बिहाफ पे करते हैं, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे करते हैं. ओके, सो आर्टिकल 53 जो होता है, दैट क्लियरली स्टेट्स दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी vested in the president. Okay, लेकिन फिर भी there are some constitutional limitations on his executive powers. उन्होंने जो उनके जो powers है, that have to be used in accordance with the provisions of the constitution. Okay, सारे discretionary powers नहीं है. He has to take the advice, he or she has to follow the advice of the council of ministers. Okay, अगर president ऐसा कोई mandatory provision को violate करते हैं, so he is liable to be removed by the process of impeachment. Sorry. तो मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जैसे लेट्स से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सेज कि द प्रेसिडेंट हैज टू, मस्ट, शैल साइन द बिल, है ना, फॉर इट टू बी अ लॉ. कि अगर राज्यसभा ने पास कर दिया है बिल, लोकसभा ने पास कर दिया है, तो द प्रेसिडेंट शुड आल्सो साइन द बिल. ही हैज टू साइन द बिल. ओके, ही कैन नॉट defer the bill, or he cannot send it for reconsideration or something like that. ऐसा नहीं कर सकते, right? That is what the condition is when it comes to the constitutional amendment bill. तो अगर तो ऐसा अगर, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ऐसा करते हैं, अगर वो बिल को रिटर्न करते हैं या असेंट नहीं देते हैं अपना, if the president does not give his assent to the bill, then that is a violation of the constitution. It will count as a violation of the constitution because वो mandatory process के हिसाब से नहीं जा रहा है. Okay, so इस केस में he will become open to the process of impeachment because he has already committed a void act. उन्होंने constitution के खिलाफ कुछ already commit किया है. Okay, so he is liable to be removed by the process of impeachment. ठीक है, liable इसका मतलब ये नहीं कि immediately दूसरे दिन वो impeach हो गए. Impeachment का process properly follow करना पड़ता है. वो you remember 14 दिन का notice and then 25% people should sign the notice and say we have to impeach the president. First house में pass करो, फिर second house में pass करो, है ना, तो वो वाला process पूरा complete करना पड़ता है. All right, now let's look at the executive powers of the president. Administrative, military, diplomatic, legislative and judicial. अलग-अलग powers है. We begin with the administrative powers first. Simple है, बहुत सिंपल है. बहुत वेरिड काम होता है प्रेसिडेंट का, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आर इजी. फॉर्मल हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर फॉर्मली टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. ओके, जो भी लाइक आई सेड ना कि इनके नाम पे सारा एक्शन चलता है. ओके, जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है यूनियन का, वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे चलता है. जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स, अश्योरेंसेस ऑफ प्रॉपर्टी आर मेड ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे किए जाते हैं. ओके, हम जितने भी ट्रीटीज जाके साइन करते हैं, प्रेसिडेंट ने खुद भी साइन नहीं किया तो भी प्रेसिडेंट के नाम पे साइन किए जाते हैं वो सारे ट्रीटीज एंड एवरीथिंग. ओके, तो जितने भी ऑफिसर्स है यूनियन के, द प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एवरीबडी एल्स, है ना, तो वो सारे द जुडिशरी एंड एवरीवन, दे आर ऑल हिज सबऑर्डिनेट्स. ओके, वो सब उनके सबऑर्डिनेट्स है. एंड प्रेसिडेंट हैज द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द अफेयर्स ऑफ द यूनियन. ओके, दैट इज द होल आइडिया. The prime minister is supposed to keep him informed, and rather if he wishes to seek information, so he can also seek that information in his own way. Okay, so he relating to everything कि कौन सा legislation कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, किस स्टेज में है, administrative policies क्या है आपके, administrative decisions क्या लिए गए हैं, he has the right to be informed of the affairs of the union. Okay, then
this person, the president, also goes ahead and appoints a lot of high dignitaries of the state. ये वो सारे list है of people जो वो appoint करते हैं. Prime Minister of India, Council of Ministers, Attorney General for India, CAG, Comptroller and Auditor General, जजेस, जितने भी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट होते हैं वो उनकी अपॉइंटमेंट होती है. गवर्नर ऑफ अ स्टेट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी जॉइंट कमीशन, सबके मेंबर्स ये अपॉइंट करते हैं. बैकवर्ड क्लासेस ऑफिशियल लैंग्वेज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, इसके ऊपर जो भी कमीशंस होते हैं, ये ऐसे फेमस कमीशंस जो हम सेटअप करते हैं ना, उसके सारे के सारे अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट की तरफ से आते हैं. ओके, स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ऑल दीज different positions or rather officers of the state are usually appointed by the president. Okay, अभी president appoint करने का मतलब ये होता है कि president के नाम से वो order आती है. That if you've ever seen the appointment letter for the prime minister or something like that, or any officer of the union, so it properly states that I, the president of India, appoints you to this particular position. Okay, that sort of thing. So for some appointments, not I, the president of India, but you are appointed to this position by the president of India, that sort of thing. Okay, the president has to consult other officers. Okay, now ye kissa samajh lijiyega. President cannot appoint these officers based on what he or she feels. Okay, वो उनका discretionary काम नहीं है. That is not something that is left to his discretion. उनके मर्जी के हिसाब से वो अपॉइंट नहीं कर सकते. He has to consult other officers. For example, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं. ओके, प्राइम मिनिस्टर वो उनको अपॉइंट कर सकते हैं हु द पर्सन हु इज यूजुअली द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी. जो भी लीडर होते हैं मेजॉरिटी पार्टी के, तो उनको यूजुअली वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं. एंड देन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं. ही कैन नॉट अपॉइंट समवन एल्स अदर देन दोज पीपल दैट द प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट. वो अपने मन से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को नहीं अपॉइंट कर सकते. प्लीज रिमेंबर. देन उनको कॉलेजियम का एंड सबका एडवाइस लेना पड़ता है जब वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं. ओके, सीजेआई का एंड कॉलेजियम का एडवाइस सीख करना पड़ता है जब सुप्रीम जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स होंगे. ऑलराइट, सो ही ऑलवेज हैज टू कंसल्ट अदर ऑफिसर्स इस केस में. इनफैक्ट ये वाले जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फाइनेंस कमीशन, ये कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस एंड ये सारे अपॉइंटमेंट्स भी उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के इससे करने पड़ते हैं. लाइक गवर्नर ऑफ द स्टेट और एवरीथिंग, उसके लिए भी उनको इनकी एडवाइस चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एडवाइस चाहिए. ओके, नाउ प्रेसिडेंट किस किस को रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द पावर? मिनिस्टर्स को इंडिविजुअली. ओके, अभी वंस अगेन ये वाले जो ये मिनिस्टर्स को रिमूव करने का जो स्कीम होता है ना, वो ऐसे काम करता है कि द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट हैप्पी विद दैट पर्टिकुलर मिनिस्टर. ओके, and he or she does not wish to have that minister in the cabinet. Okay, so the ideal process is that the prime minister conveys his or her dislike to the minister, and then the minister resigns. If the minister does not resign, that is the decent way of going about things, or a more practical way of going about things. If the minister persists and does not resign, अगर वो कहते कि नहीं यार नहीं resign करते, जाओ क्या कर लेंगे, तो फिर president has the power to remove the minister from his or her position on the advice of the prime minister. Okay, तो prime minister जाके president को बोलेंगे आप उनको निकाल दो, that sort of thing, उनको उनकी job से निकाल दो, and the minister stands removed because he was appointed by the president, right? जो appointing authority है वही उनका removal authority, जो मतलब suspending authority. ठीक है, चलेगा. नेक्स्ट यू कम अक्रॉस द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, तो इनको भी वो रिमूव कर सकते हैं. गवर्नर ऑफ स्टेट, दैट इज आल्सो पॉसिबल. चेयरमैन और मेंबर ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन ऑन द रिपोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये चेयरमैन और मेंबर ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्ट चाहिए कि इन्होंने कुछ तो गलत किया है. ओके, या अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया है या अपने काम के हिसाब से नहीं किया है. अगर जुडिशरी के किसी मेंबर को निकालना है या इलेक्शन कमिश्नर को निकालना है, जैसे जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और द इलेक्शन कमिश्नर, दैट हैज टू बी डन ऑन द एड्रेस ऑफ द पार्लियामेंट. वो पार्लियामेंट में वो इम्पीचमेंट वाला प्रोसेस करना पड़ता है. सिर्फ उसको इम्पीचमेंट नहीं कहते, लेकिन द सेम प्रोसेस हैज टू बी फॉलोड. ओके, जो प्रेसिडेंट को निकालने का प्रोसेस था उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है. एंड देन ऑन द एड्रेस ऑफ द पार्लियामेंट, अगर दोनों हाउसेस ने हाँ बोल दिया, तो then these people stand removed, either a member of the judiciary or the election commission. ठीक है,
President does not enjoy any absolute power in the appointment and removal of these officers. ये भी समझ लीजिएगा कि like I said, कोई भी पावर डिस्क्रेशनरी नहीं है इनका. ये जो अपॉइंटमेंट्स के एंड रिमूवल्स के पावर्स है, they are not discretionary in nature. They are always done on the advice of the Prime Minister and the Council of Ministers. Okay, चलेगा? Okay. ठीक है. Next, you consider the diplomatic and military powers of the president. Okay, diplomatic and military powers of the president are diplomatic को consider करते हैं, फिर military को consider करते हैं. Okay, diplomatic powers माने इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर. ओके, सो जितने भी मिलिट्री के ट्रीटीज या मिलिट्री की नहीं, कोई भी ट्रीटीज, ट्रेड अग्रीमेंट्स वगैरह, ये भी जो ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट्स आप नेगोशिएट करते हैं दूसरे कंट्रीज के साथ, तो वो प्रेसिडेंट का टास्क है. ओके, सो ये नेगोशिएशन जो होता है दैट इज डन ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. एंड ये जो ट्रीटी वो साइन करते हैं दैट इज सब्जेक्ट टू रैटिफिकेशन बाय द पार्लियामेंट. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन्स. मैंने आपको इसके पहले भी रैटिफिकेशन का मतलब समझाया था. सी क्या हो जाता है ना कि यूजुअली जब आप किसी कॉन्फ्रेंस में आप मतलब यू नो द some minister of India, prime minister of India, the president of India, or you know some foreign minister or trade minister or finance minister, जो भी है, okay, जहाँ कहीं आप जाते हैं treaties negotiate करने को, तो वो treaties जो negotiate करने का काम होता है that falls to the government, all right, जो current government होता है या cabinet होता है, उनका काम है वो. So those poor people, they negotiate those treaties. Okay, they sit and do all that work. It's very tedious and it's a huge amount of care to negotiate a treaty. So you have to do all that work, all right, and you go ahead and agree on certain conditions कि हम ये conditions allow कर सकते हैं लेकिन ये वाले नहीं कर सकते. Proper negotiations होते हैं. Okay, and ये जो होता है जिसके नाम पे फाइनली वो ट्रीटी साइन होती है, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, इट्स डन इन हिज नेम. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करने वाले तो इंडिया ने साइन किए जैसा हो जाता है वो. ओके, फाइन, ठीक है. ये जो नेगोशिएशन होता है अगर प्रेसिडेंट खुद कर रहे होंगे तो दैट इज डन ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ओके, इट इज नॉट लाइक, मतलब प्रेसिडेंट ट्रीट को तब साइन करते हैं जब उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसको एडवाइस करते हैं कि हाँ चलो साइन करना है करके. ओके, एंड वंस दैट ट्रीटी इज साइंड then there is a certain period, कुछ 6-8 महीने का, 1 साल का, depending on what the treaty is. उतने पीरियड में उस ट्रीटी को रेटिफाई करना चाहिए अपने पार्लियामेंट में. रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि एक बार कोई अग्रीमेंट या ट्रीटी साइन हो गया तो उसको वैलिड बनाने के लिए या लीगली बाइंडिंग बनाने के लिए आपका जो पार्लियामेंट है या जो लेजिस्लेचर है, इंडिया में तो एटलीस्ट ये सिस्टम है कि वो इसने, अब ये तो गवर्नमेंट ने किया था जो भी ट्रीटी साइन किया था, दैट डज नॉट मीन द एंटायर लेजिस्लेचर अग्रीज, राइट. तो अपने लेजिस्लेचर ने भी अग्री करना चाहिए, तो उन्होंने भी मेजोरिटी वोट दे देना चाहिए कि हाँ वी आर गुड विद द ट्रीटी. Okay, now this works only when the majority is actually in majority. Say like if it's a coalition government, then you don't want people to go ahead and disagree over certain points and stuff like that. So if the party has a majority, good enough majority in the legislature, then it should not be a problem. Okay, the ratification of the treaty should not be a problem. All right, ठीक है. So next, president जो होते हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं in all international forums and affairs. Okay, ये तो सही है ना. He or she is the official face of India. Okay, वो constitutional head है इंडिया के. The president of India seeks and receives diplomats like ambassadors, high commissioners, है ना, ऐसे सारे लोगों को वो send and receive करते हैं. तो वो भी एक होता है यार. You've seen those pictures क्या जहाँ पे प्रेसिडेंट सबको रिसीव करते हैं, प्राइम मिनिस्टर रिसीव करते हैं, ऑफिशियल बिजनेस होता है वो उन सबका. एनीवेज, here we go. Military powers. Next section is military powers. Okay, so military powers माने he is the supreme. ये तो आपको पता होगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है. Supreme Commander of the Defense Forces of India, है ना, तीनों फोर्सेस के ये सुप्रीम कमांडर है. President appoints the chiefs of the Army, Navy and Air Force. तो इनके अपॉइंटमेंट्स भी यही से होते हैं. Once again, गवर्नमेंट से रिकमेंडेशन आता है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रिकमेंडेशन होता है. President has the power to declare war or conclude peace. If India declares a war against a country or concludes a peace treaty, once again it's done in the name of the President of India. Okay, ठीक है. The decision is taken by the Prime Minister and the Council of Ministers, but the action is done in the name of the President. Okay, the President can exercise these powers by the sanction of the Parliament on the advice of the Council of Ministers. This is a proper given thing कि ये वो खुद से नहीं कर सकते. It has to be done on the advice of the Council of Ministers. ठीक है.
Now we come to the legislative powers. Give me one moment, people. Guys, can you excuse me for a couple of minutes? 2 minute दीजिएगा. I'll be back in 2 minutes. Okay. बहुत दिनों बाद वही Okay. Sorry. All right, so here we go. What are the legislative powers? Legislative powers मतलब those powers that are related to the parliament. Legislature से related या law से relate law making procedure से related जो भी powers है वो सारे powers. Okay, legislative powers. So first of all, let's begin with the powers that he has related to the parliament. Okay, summoning, prorogation and dissolution. Okay, तीनों चीजें, तीनों actions जो है वो प्रेसिडेंट परफॉर्म करते हैं. टू समन एंड प्रोरोग द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा. हाउस को समन करना मतलब यू नो हाउ द वर्किंग ऑफ द हाउसेस, राइट? ऐसे सेशंस में काम करता है. तो वो सेशन को खत्म या बंद करने का जो काम होता है उसको कहते हैं समन एंड प्रोरोगिंग द हाउस. ओके, सो दैट इज यूजुअली व्हाट इज कॉल्ड एज समनिंग एंड प्रोरोगिंग द हाउस. कि जब सेशन शुरू होता है तो समन किया जाता है, जब सेशन को खत्म करना होता है तो देन सेशन ऑफ द पार्लियामेंट को, तो देन द हाउस इज प्रोरोग्ड, ओके, फॉर द अंटिल द नेक्स्ट सेशन. जब तक नेक्स्ट सेशन के लिए समन नहीं किया जाता है. ओके, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज समनिंग एंड प्रोरोगेशन. ओके, एक और चीज द प्रेसिडेंट कैन डू, इट इज टू डिसॉल्व द लोअर हाउस. राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं कर सकते, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, लेकिन लोकसभा इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन एंड वो डिसॉल्व करने का हक प्रेसिडेंट का होता है. ओके, सो वंस अगेन द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोअर हाउस but only on the advice of the prime minister. Okay, once again this is a issue. So but he can dissolve the Lok Sabha, okay, or the lower house. And also if he wishes to summon a joint meeting, तो फिर वो joint sitting जो होता है उसको भी summon कर सकते हैं between the houses of the parliament in case of a deadlock. Okay, normal legislative procedure में इन केसेस जहाँ पर हाउस के बीच, दोनों हाउसेस के बीच में डिसएग्रीमेंट होती है एंड इट्स बीन 6 months सिंस दे हैव लास्ट डिसएग्रीड और एनी एक्शन हैज बीन टेकन, सो एक जॉइंट सेशन समन कर सकते हैं प्रेसिडेंट एंड ही कैन डिसॉल्व, लेकिन लेट देम. फिर एक जॉइंट सेशन में जॉइंट सिटिंग में वोटिंग हो जाता है एंड देन उसमें व्हाट डू यू से
Obviously Lok Sabha wins by numbers, but clearly that will that dissolves resolves the dispute or resolves the disagreement between the parliament, I mean both houses of the parliament. Okay, so वो joint sitting जो होता है वो समन करने का राइट president का होता है. Now once again relating to the parliament, the opening address. Okay, opening address जो है president का उसको consider करते हैं. तो opening address के लिए president addresses both houses of the parliament assembled together. Okay, यूजुअली ना जब कोई भी लोकसभा का, अभी राज्यसभा का तो कांस्टेंट वो परमानेंट हाउस है तो कॉन्स्टेंटली चलते रहता है उसका सारी सेशंस एंड एवरीथिंग, एंड एवरी 2 years नए मेंबर्स आते हैं एंड पुराने मेंबर्स चले जाते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसा ऐसा स्कीम होते रहता है. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज कि प्रेसिडेंट जो होते हैं तो ही एड्रेस यूजुअली जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू द लोकसभा इलेक्शंस, तो जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं ना तो उसके बाद जो फर्स्ट सेशन होता है आफ्टर जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा, तो उसका जो कमेंसमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज द, वो जो सेशन होता है दैट इज एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट. ओके, एंड हर नए साल का जो फर्स्ट सेशन होता है दैट इज आल्सो एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट. ये दोनों सेशंस को एड्रेस करने का राइट रखते हैं प्रेसिडेंट. ओके, सेकेंडली प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करते हैं ऑफ द कॉजेस ऑफ इट्स समन्स. जब प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को बुलाते हैं कि चलो यार यू गाइज आर ऑल invited to this particular session, and it's तो you clearly inform करते हैं कि because we are beginning with the winter session or because we are वो cause जो भी होगा वो clearly बता देते हैं. Nominating members to the Rajya Sabha, this is the third power that we are considering now. Okay, तो यू नो दिस राइट कि हमारे यहाँ पे लोकसभा का मैं बात ही नहीं कर रही हूँ बिकॉज दैट थिंग हैज गॉन अवे ना, तो राज्यसभा का ही बात करते हैं. तो राज्यसभा में 12 members are nominated by the president, okay, from the fields of literature, art, social service, simply people who have a little different experience in life. Okay, and they can, with the whole logic that these people can bring in their life experiences and make sense to a try to bring more sense to the legislative procedure. Okay, अब लोकसभा में कौन से members usually elect होते हैं, जो वही जो लोग elect करके देते हैं. Okay, so those are usually politicians, somebody who is working with the people and so on so forth. Okay, but हमारे जो decisions होते हैं उसके लिए it is good to have somebody else's a third person perspective. For example, अगर कोई sports वगैरह से related कुछ decision लेना हो, okay, so then having an actual sports person, somebody who has won a gold medal for India in, or who is an Olympian or something like that, somebody who is of a high stature when it comes to sports and who has lived that life, that person might be able to provide you with a better perspective. वो थोड़ा सा बेहतर opinion दे सकते हैं आपको कि ये वाले decisions कैसे लेने चाहिए. Okay, hence you try to gather such varied experience. Okay, so that's the whole logic behind nominating 12 members of the Rajya Sabha, okay, from the fields of literature, science, art and social service. Okay, president का एक और power है to address, the right to address and send messages. Okay, ये भी discretionary नहीं है, ये भी किसी के कहने, मतलब प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे होता है ये nominating members का address, I mean राज्यसभा वाला scheme. Right to address and send messages, the president has the right to address either house or their joint sitting at any point of time. Okay, तो president address कर सकते हैं joint sitting को या किसी भी house को कभी भी at any point of time that he or she wants, he may do that. Okay, president also has the right to send messages to the parliament either about a pending bill or any other matter. अगर उनको लग रहा है president को कुछ ये करना है, like if he wishes to convey something to the house or any both houses or just one house, or कोई भी pending matter लग रहा है उनका, कुछ भी होगा तो उनको हक होता है messages भेजने का to the parliament. Okay, so far none of the presidents have ever done that, but that's how it works. Okay, laying reports before the parliament, now this is another power of his. Okay, now जितनी भी reports हमारे parliament में present किए जाते हैं, it is the duty of the president to be caused. ऐसा नहीं कि president आते हैं खुद to lay the reports. It's not like all these reports are read by the president to the parliament. ऐसा नहीं होता है. Okay, लेकिन it is his responsibility to make sure that these reports are laid before the parliament. Okay, वो उनका responsibility होता है, उनका duty है. So it is the duty of the president to be caused to be laid before the parliament all these reports. जैसे budget, he has to ensure that budget is going according to the plan. Okay, कि अगर
फर्स्ट को बोला है बजट सेशन होगा, तो फिर उस दिन होगा, मतलब जो भी आपका सिटिंग है उस दिन वो बजट बोला जाएगा, पढ़ा जाएगा ऐसे। ओके, ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट, फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस, यूपीएससी रिपोर्ट, ये जितने भी स्पेशल ऑफिसर फॉर एससी एसटी बैकवर्ड क्लासेस कमीशन रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ये जितने भी कमिटीज या कमीशंस ऑर्गेनाइज करते हैं उनके रिपोर्ट्स आते हैं, राइट? वैसे ही तो नहीं, then clearly those committees are clearly working towards a goal. Once that goal is finished, or that thing is done, तो उसका एक report बनता है, तो all those reports have to be read before the parliament. All right, so वो सारे, it is his duty to ensure that that happens. All right, next, prior sanction to the नहीं अच्छा चलो ठीक है, ये वाला कर सकते हैं, prior sanction to legislation. I have 2 minutes. प्रायर सैंक्शन टू लेजिस्लेशन में सर्टेन लेजिस्लेशंस जो होते हैं ना, उसके लिए प्रेसिडेंट का सैंक्शन लगता है बिफोर दैट बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट। ओके, सपोज अभी लेजिस्लेशन आइदर किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर इन केस ऑफ अ मनी बिल क्लियरली सिर्फ इसमें ले कर सकते हैं लोकसभा में। ओके, तो वॉट एवर द केस जो भी होगा, तो दैट हैज टू बी सम लेजिस्लेशंस जो होते हैं ना, उसके लिए प्रेसिडेंट ने पहले से हाँ बोल के रखना चाहिए कि हाँ ये मेरा रिकमेंडेशन है कि ये बिल को, दिस बिल शुड बी लेड इन द पार्लियामेंट। ओके, सो इट अभी वो कौन से प्रोविजंस होते हैं? द बिल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। ओके, बिल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स और ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, उसका जो बिल होता है that has to be presented or initiated in the parliament with the president's recommendation. Money bill के लिए भी recommendation president का लगता है। Okay, expenditure from consolidated fund of India, taxation in which states are affected, or state bills imposing restrictions upon freedom of trade. ये सारे cases में the president's prior recommendation is needed before the legislation is initiated in either house. The president should recommend that I am recommending that this bill be laid before the house. Okay, but just because उन्होंने पहले recommend नहीं किया, इसलिए वो बिल इनवैलिड नहीं हो जाता है। ओके, अगर ये बिल पास हो गया है, तो जब तक प्रेसिडेंट उसको हाँ कहते हैं एंड में, as long as he eventually assents to the bill at the end of the day, तो it doesn't matter अगर उन्होंने पहले recommend किया था या नहीं किया था। ओके, इतना फर्क नहीं पड़ता है। Is this done? समझा? That is not just because पहले प्रेसिडेंट ने recommend नहीं किया तो अभी जाके ये बिल पास नहीं होगा वगैरह, ऐसे कुछ नहीं होता है। That is not how this works. Okay, चलो, this ends our session for today, and we'll continue with the test tomorrow. Okay, thank you very much for joining me, and you guys take care and stay safe. Okay, bye bye.